Hello kids, welcome to my channel Knowledge First to Fifth. If you are first on my channel, so like, share and subscribe. Today we are learning about rhyming words. What is rhyming words? Rhyming words are words that have the same sound at the end. For example, hat, cat, hat, cat, है ना। सो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनकी जो लास्ट की साउंड होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। हैट, कैट, हैट में भी एट आ रहा है ना लास्ट में, और कैट में भी एट आ रहा है। सो दे हैव सेम साउंड ऑफ द एंड। इनकी लास्ट की साउंड सेम है ना। हैट, कैट। लेट्स प्ले अ गेम। मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी और आपको बताना है क्या ये ठीक है या रॉन्ग है, इनकी लास्ट की जो साउंड है वो सेम है या नहीं। हैन, पेन, हैन, पेन। यस, दे हैव सेम साउंड ऑफ द एंड। हैन, पेन। हैन में भी लास्ट में एन आ रहा है ना, और पेन में भी लास्ट में एन आ रहा है। सो दे हैव सेम साउंड ऑफ द एंड। हैन, पेन। बी, ट्री, बी, ट्री। यस, they have same sound of the end. These are rhyming words because they have same sound of the end. B, tree, लास्ट में ई की साउंड आ रही है ना बी में, और ट्री में भी ई की साउंड आ रही है। बी, ट्री। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मॉप, पेट, मॉप, पेट। Do you think these are rhymes? Yes or no? No, because they have different sound of the end. Mop, pet. मॉप की साउंड कैसी है लास्ट में? ऑप। और पेट की कैसी है? एट। सो they have different sound of the end. These are no rhyming words. Okay. Next example. Bed, mat, bed, mat. Yes, they have same sound of the end. These are rhyming words. Bed, mat. Hit, sit, hit, sit. Yes, they have same sound of the end. They are rhyming words. ओके, मैं 3 वर्ड्स लेती हूँ, देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है, किसकी साउंड सेम है और कौन सा ऑड है। ओके, फैन, हॉट, पेन, फैन, हॉट, पेन। Which word there does not rhyme? Hot, because fan has a sound N. पेन में भी लास्ट में क्या आ रहा है? एन। बट हॉट में आ रहा है ऑट। नो, दे हैव डिफरेंट साउंड ऑफ द एंड। हॉट की साउंड अलग है ना, बट फैन और पेन की साउंड सेम है लास्ट की, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे? राइमिंग वर्ड्स। फैन, पेन, फैन, पेन। ओके, थैंक यू।